जनता के लिए है। Is Indira a factor this election? Ayodhya of the South simmers. Unmissable election ground reports. Hello and welcome to this very special ground report high up in the highest mountain range of Karnataka. Shiv says, Namaskara. Live from Chikmagaluru. आप सब इंदिरा जी को जानते थे, आपने देखा सुना उनके बारे में, क्या खासियत थी उनमें? ये खासियत थी कि आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा। A descendant of one of India's most powerful prime ministers. Invoking her grandmother in a state that embraced her nearly half a century ago. As Karnataka heads into another election, a part of the Congress party's quest to return to power in the southern state is in the shadow of its towering former leader. But to chart Indira's Karnataka tryst and why it's echoing in the Congress party's aggressive return campaign, we must start in the famous little town called Sringeri. For it was here that Indira Gandhi, defeated and discarded after the emergency, began her rebirth. This is the Sringeri Mutt in Karnataka, famous the world over. Its importance and resonance stretches way beyond Karnataka to all of India and literally all the world. Now you're probably wondering why I'm at the Sringeri Mutt. Why am I talking about the Sringeri Mutt in the context of pole-bound Karnataka? Well, it's very interesting. Just a few days ago, Priyanka Gandhi Vadra was here to take the blessings of the Swamiji in Sringeri. But she's only the latest Gandhi to actually do that, because the Sringeri Mutt holds very special significance for the Gandhi family. Over 4 decades ago, Indira Gandhi had come to this very same mutt to take blessings, and that was right before her historic win from Chikmagaluru. This was right after the emergency when she was completely under attack, and after she'd taken the blessings when she won from Chikmagaluru, Sringeri became something of enormous significance and auspicious value, as it were, to the Gandhi family. Rajiv Gandhi also came to Sringeri in the 1980s. In fact, there is a famous institution that's named after Rajiv Gandhi here. Rahul Gandhi had come in 2018 when he was the Congress president. And now Priyanka Gandhi has also come. There will probably be more visits as well. The Indira Gandhi visit to Sringeri was of special significance because not only did it indicate to her that this mutt had something to do with her own success and her own revival, but also the revival, crucially, of the Congress party. And remember, that resonates with the Congress party now. The Congress party has been on the back foot for a very long time. They've had the misfortune of not tasting electoral success for a very long time. They're smelling success now here in Karnataka. But overall, on the road to 2024, the Congress is very strongly of the belief that it requires a rebirth and a revival. And that's the reason why they're hoping for the Sringeri Mutt and symbols like this one to show the path for revival, show the path for resurgence, on how the Congress, once a great political force, can actually bounce back and be a force to reckon with. Do the answers lie here at the Sringeri Mutt? Well, perhaps only the deity inside actually knows. Unlike many other mutts in Karnataka, the Sringeri Mutt is not known to play a political role, and yet it triggered something in Indira Gandhi. इंदिरा गांधी टाइम में क्या हुआ, इसी टाइम में वो हार गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री थी वो, तुरंत इसमें क्या वो इमरजेंसी आया था, इसी टाइम में हार लिया था। इसके लिए वो गुरुजी का दर्शन किया और इसके बाद इधर एमएलए था डीबी चंद्रेगौड़ा था, इसी ने रिजाइन किया और इसके मन में आ गया यहीं से मैं चुनाव अखाड़ा के लिए लड़ूंगा। इसी टाइम में वो इधर यहाँ से जीत लिया चिकमंगलूर क्षेत्र, वही इसी टाइम में इसको यहाँ से ज़्यादा क्या बोलते हैं भक्ति सब आ गया इसको।
Indira Gandhi was deeply religious, but if success could trigger faith, then her landslide return to the Lok Sabha from Chikmagalur, the hill paradise in central Karnataka, made her a staunch Sringeri Bhakt. This young man in this photograph hovering over Indira Gandhi, a man who looks like a rock star, probably even a Kamal Hassan look-alike, is a very young Atiq Kaisar. This gentleman we have here with us here in Chikmagalur. Atiq bhai, thank you. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. ये तो एक बहुत ही शानदार पिक्चर है. 1978 का पिक्चर है. सब जानते हैं कि 1978 में चिकमगलूर में क्या हुआ था. इंदिरा गांधी आई थी कैंडिडेट बन के. बहुत बढ़िया सा जीत भी हुई उनकी. इस तस्वीर के बारे में बताइए, क्या हो रहा है इस तस्वीर में, पहले ये बताइए. यहाँ पर जो है जब इंदिरा गांधी जी को नॉर्थ में हार गई वो वहाँ पे रायबरेली से, तो उस वक्त यहाँ के इस रियासत के जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री देवराज जी थे. यहाँ पर उस वक्त जो एमपी थे कांग्रेस के डी.बी. चंद्रेगौड़ा जी थे, उन्होंने इस्तीफा देकर यानी कि उनका राजीनामा लेकर रेजिग्नेशन लेकर देवराज साहब ने उस वक्त के मुख्यमंत्री ने मैडम इंदिरा गांधी जी को जो यहाँ पर पार्लियामेंट में लड़ाया गया था, यानी कि उनको यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है खड़ाया गया था. उस वक्त के जो लोग थे विलेजेस के अंदर इंदिरा जी को जो है माता बोलते थे. वो जिताने के लिए वो अपने आप में गए. हम लोग जब उनके साथ कैनवास के लिए कैंपेनिंग के लिए कहीं भी गए तो वो ऐसा बोलते थे, वहाँ के लोग जो विलेजेस के लोग हैं, जैसे हमने गीता को अपने दिल में रखा है ऐसे हमने इंदिरा माँ को भी अपने दिल में रखा है. तो हम लोग जो है नॉर्थ में इन लोगों ने इनको हराया है, लेकिन हम साउथ के लोग, हम कनेडिगास लोग इनको यहाँ से जिता के फिर पार्लियामेंट भेजेंगे. And that bhakti has passed down the family, with Rajiv Gandhi visiting several times in the 80s. Rahul Gandhi making Sringeri an important stop as Congress president during the 2018 election campaign in Karnataka. And finally, Priyanka Gandhi, whose visit to Sringeri last week produced this viral image with a temple elephant. The Gandhis have had a steady connect with Chikmagalur, but the constituency, both in the Karnataka Assembly as well as in the Lok Sabha, hasn't been a Congress bastion for a long time. With the BJP's C.T. Ravi winning the Assembly seat since 2004 and the BJP's Shobha Karanlaje winning as MP since 2014. But does the memory of Indira Gandhi have no resonance anymore in Chikmagalur? अभी जो है न्यू जनरेशन आ गया है. उस वक्त के जो लोग थे आज जो है हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है, अगर हैं भी तो बहुत 20% होंगे लोग. 80% आज जो है न्यू जनरेशन है. जो 20% आज भी जो है वो आज भी आप उनके पास कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का कैनवस करने की जरूरत नहीं है. वो 20% वोट जो है मैडम इंदिरा गांधी की तरफ से मिलता है, कांग्रेस को नहीं. वो बोलते हैं हमारी माँ का है पूरा पक्ष है, पार्टी है, हम उसी को देंगे. लेकिन बहुत सारे जो मेजॉरिटी है जो आज न्यू है, न्यू जनरेशन है, उन लोगों को मालूम नहीं है कि इंदिरा गांधी का यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका क्या रोल था करके. लेकिन आज के कांग्रेस में पहले की कांग्रेस में लॉट ऑफ डिफरेंस है. पहले उसको जो है इसको बोलते थे कि भाई एक खिला है, जिसको बोलते हैं कन्नड़ में लोग बोलते हैं ये कांग्रेस ना भद्रकोटी. लेकिन आज वैसा नहीं है माहौल, क्योंकि यंग जनरेशन आ गया है. आज की ये मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स में जो है लोगों में जो है सेपरेशन हो गया है. इंदिरा गांधी का जीत हुआ है ना, इसके लिए याद आता है. और अभी आप बोलते तो आप अभी इसका संपर्क ज्यादा नहीं है. आप देखते हैं जीत आया तो चुनाव आया तो इसी टाइम में आते हैं. राजीव गांधी ऐसा नहीं, फिर 2-3 बार आए हैं इधर, सब लॉज ऐसा क्या उद्घाटन इसके लिए भी आए हैं. और प्रधानमंत्री होने टाइम में भी आया है, मांझी होने के बाद भी आया है. इसी तरह अभी वो कम हो रहा है, इतना ही और कुछ भी नहीं. इसके लिए याद रहते हैं ना, इसके लिए आते हैं. याद किसको रहते हैं वो फिर आते हैं. अभी प्रियंका गांधी अभी भी आए हैं, लेकिन वो सब पॉलिटिक्स में. श्रृंगेरी आया था चुनाव प्रचार के लिए, बालेहोन्नूर यहाँ से वहाँ आए थे. श्रृंगेरी आकर जाकर दर्शन किया, क्योंकि इसको याद रहता है ना. फिर हम इंदिरा गांधी आई थी, हम भी जान सकते हैं, इसको मन में है. हम इधर जाकर शारदांबा दर्शन किया, गुरुजी का दर्शन किया तो हमको अच्छा होगा.
नेक्स्ट जीत होगा, इसी इसका प्रार्थना है ना, इसके लिए वो आते हैं। But what is the man fighting in Indira's name now think? This is the place from which Indira Gandhi won in 1978, the Lok Sabha, in the Lok Sabha. Is the blood of Indira Gandhi still here in this constituency, sir? 100%. You are inspired by Indira Gandhi? I am inspired by Indira Gandhi and I am inspired by Rahul Gandhi in my college time. My grandfather is Congressman. I am first elected from 2001 municipal corporator. I am elected from 2001 Congress first time. Another 15 years I am in BJP, but after 2004 I am going to BJP. Either Congress is not winning here, but I am returned to Congress 100%ly winning the Congress. I am defeated Shiv Aroor. BJP sitting MLA, who's been the boss of Chikmagalur for 4 terms spanning 2 decades now, rebuts the Indira factor. चिकमगलूर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 1970s में इंदिरा गांधी यहां जीत के लोकसभा में गई थी। आज भी जब हम घूम रहे थे, इंदिरा गांधी के नाम लेकर काफी कैंपेनिंग भी हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या आपको लगता है कि एक इंदिरा या एक इंदिरा गांधी फैक्टर है यहाँ पर? प्रियंका गांधी भी आई थी, राहुल गांधी भी आए हैं पहले। जनता बहुत विश्वास रख करके 1979 में इंदिरा गांधी को जिताया, 78-79 में जिताया। बाद में इंदिरा गांधी जी चिकमंगलुरु भूल गया। उन्हें प्रॉमिस दिए थे, वादा किए थे यहाँ रेलवे कनेक्शन करेंगे। फिर रेलवे कनेक्शन मिला कब वो अटल जी प्रधानमंत्री रहे, उस समय यहाँ श्रीकंठप्पा जी संसद रहे, उन्हें सैंक्शन करके रेलवे कनेक्शन दिया। इंदिरा जी चिकमंगलुरु जनता को भूल गए थे। आज याद करने वाला लोग कोई है ही नहीं। क्या किए ऐसा, उस जमाने में क्या काम किया ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो कांग्रेस के पास उत्तर नहीं है। सीटी रवि आप क्या किए, मोदी जी क्या किए प्रश्न पूछेंगे तो मैं 10 उत्तर देने का तैयार हूं। वो लोग उत्तर देने का एक भी उत्तर नहीं है। Strangely, Chikmagalur, which had embraced Indira Gandhi with enormous faith and love, doesn't have a single statue of her. Odd in a political culture that very much encourages such acts of tribute. But Indira remains in the memories, the actions, and the sentiments of the people here. In Karnataka, Indira found not only her own revival, but the rebirth of the Congress party. As her grandchildren now fight for survival and relevance on the road to 2024, will Karnataka be the beginning of better things for India's oldest party? Or is the past simply that, the past? With Shivamurthy Gurumat in Sringeri and Chikmagalur, Karnataka, Shiv Aroor for India Today. Behind me is one of Karnataka's and India's most unique hill shrines. It's called the Sri Guru Dattatreya Baba Budan Swami Dargah Peetha. It's unique, in case you haven't already guessed from the name, because for centuries together, Hindus and Muslims have come in large numbers together to worship at this very same shrine. But for the last few decades, there has been tension, there has been violence, and it's all evolved into a full-fledged dispute. So much so that in some sections, the Baba Budan Shrine area is even referred to
as the Ayodhya of the south. Even the sitting BJP MLA from Chikmagalur, under which this hill shrine falls, has said there needs to be a struggle to separate the Hindu and the Muslim areas in this shrine. Today we're going to go inside in pole-bound Karnataka to show you what it actually looks like inside. Join me inside. So what we're going to do now is we're going to go inside the actual shrine premises, a place where both Hindus and Muslims worship in huge numbers every single year. Has the tension actually changed that? Are people apprehensive? We're going to go in now to find out. So the Dattatreya Baba Budan shrine is built into the mountain. It's hundreds of years old. It's been visited by people for centuries now, literally. And as you can see, the crowds are still coming in. Many people before me, many people after me as well. So we're going to go in and try and get some voices of the real people who visit this shrine. So this is the entry point into the actual cave complex, which has the Dattapit and the Baba Budan Dargah. There are priests from both sides inside guiding the faithful. So we're going to join them. Both Hindus and Muslims come here in large numbers every single year. So we're going to descend into this sacred shrine now. इस श्राइन का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा बताइए. हिंदू और मुसलमान लोग दोनों आके यहाँ पे वर्शिप करते हैं. उसके दत्तात्रेय क्षेत्र है, गुरु दत्तात्रेय पीठ है, उसके 1,000 वर्ष इतिहास है. गुरु दत्तात्रेय क्षेत्र है, उसके गवर्नमेंट में सरकार में अपॉइंट किया है, उसके सरकार में कानून में ये ने और अभिवृद्धि सकता है, उसके लग सकता है कानून में. बहुत सेंचुरीज से दोनों धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और पूजा करते हैं, तो क्या ये बदलेगा अभी? उसके सरकार में है, उसके नहीं सकता है. यहाँ पे कोई कुछ स्पेशल है? इस जगह में कुछ स्पेशल है जो एक ही जगह में दोनों साइड वर्शिप करते हैं? गुरु दत्ताತ್ರೇಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ. ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಂತ ಜಾಗ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ. उसके ಜಾಗ में अलग अलग ಶಕ್ತಿ है. ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ. Mohammed Ismail is one of the persons who works inside the shrine here. He's been here for many years together. Mohammed जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद. हम भी गए थे अंदर अभी. इस जगह का थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस बताइए, क्योंकि हिंदू लोग मुसलमान लोग दोनों जाते हैं अंदर, दोनों पूजा पाठ करते हैं अंदर, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस जगह का? यहाँ पे जब पहले के ज़माने से यहाँ इनाम दत्तात्रेय पीठ आए है, बाबा बुडन स्वामी दरगाह है, तो हज़रत दादा हयात मीर खलंदर बोलते हैं, इनको बाबा बुडन भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आए, यानी इबादत करे, यानी तपस्या करे, तो उनकी खबर नहीं, यानी समाधि नहीं है. तो उस ज़माने से बाबा बुडन बोलते हैं, दादा हयात मीर बोलते हैं, तो उनके साथ में वो लोगों की यहाँ मज़ार शरीफ है. तो उस ज़माने से भी बोलते हैं यहाँ पे दत्तात्रेय स्वामी इनाम दत्तात्रेय पीठा. इतना तो हिंदू मुसलमान के बीच में जो टेंशन था इस जगह को लेकर, बाद में हुआ. 30-35 साल से शुरू हो रहा है. तो हम देखे जो जैन चिवरी उर्स हो रहा है, आ रहे हैं सब लोग, जा रहे हैं. तो बाद में 1-6 महीने से यहाँ पे स्वामी जी भी आके हैं. तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल बन गया है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये साउथ का अयोध्या बन गया है और वो एक ये कोर्ट में जाएगा, उसके बाद एक सेपरेशन हो जाएगा. ये तो कोई वादा नहीं है. तो आ रहे मोहब्बत से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. अच्छे से आदमी आते, कोई बोलता है वो ऐसा था, वो ऐसा था. उस ज़माने से देख रहे हैं, जैसा है वैसा है. तो बोल रहे हैं आदमी लोग, हम भी देख रहे हैं. जगह कुछ बदले नहीं है, बस इतना है कि मान से स्वामी जी आए, पादु के दर्शन करते, पादु का पूजा करते, बस हम फातिहा पढ़ते हैं. अब जब इंदिरा गांधी
आए थे 1978 में, आप छोटे थे उस बार, कुछ याद है जब वो आए थे यहाँ पर? जी याद है, मगर वो मैं बहुत बचपना था मेरा, मैं 15-16 साल का होऊंगा इंशाल्लाह। वो टाइम पर हमने उतना याद नहीं है। आए वो जब वो ज़माने में उन्होंने थे, चिकमंगलूर वाले बहुत से लोग आए थे, सैयद पीर मोहम्मद शाह खादी थे, तो उन्होंने सबको बुलाए, तो 2-4 मिनट और दिए थे, हमको मालूम नहीं था। बाद में पुलिस वाले हम बच्चे लोग भगाए, चलो बोले, हम चले गए। Politicians come and go and they always visit religious shrines. But someone remembered perhaps more than anyone else here at the Baba Budan Shrine is Indira Gandhi. And the reason for that is something very interesting happened when she came in the late 1970s during her election campaign. And I caught up with someone who was right there with her when it happened. जिस वक्त यहाँ पर क्या हुआ था, वो मंदिर को जाना चाह रही थी, कह रहे थे, वो बोल रही थी कि मैं मंदिर जाऊंगी, फिर जो है तुम्हारा ये दरगाहों को जाऊंगी, ऐसे बोल रही थी। तो उस वक्त के जो है एक लीडर थे जो दिनेश गुंडूराव के दोस्त थे, FM खान, उन्होंने बोला था माता जी नहीं है, हम लोग जो है आप मंदिर यहाँ जाएंगे, फिर दूसरा जो है श्रृंगेरी तो गई हुई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर बाबा बुडनगिरी जो है यहाँ से तकरीबन इस सिटी से 18 किलोमीटर पर है, वो वहाँ जाने का कह रहे थे। तो उन लोगों को उनको गांधी जी मोहतरमा इंदिरा गांधी को जो है वो बहुत अच्छा लगा, तो ठीक है चलो हम वहाँ पे भी जाएंगे करके। तो उनकी मैं भक्ति क्या बताऊं, वो बाबा बुडनगिरी दरगाह में ऐसा किया उन्होंने, उस वक्त जो है वहाँ पर जो है वो पैरियों से उतर के जाना पड़ता है, तकरीबन 100 पैरियां होंगी वहाँ पर। किसी ने उनको, वहाँ का रहने वाला एक फकीर ने बोला आप माता जी इस चप्पल को यहीं पे छोड़ना है। उस वक्त जो है वो स्लीपर पहनी हुई थी, हवाई चप्पल जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने बड़े आदत के साथ जो है उसको चप्पल को यहाँ पर छोड़ दिया बाहर ही, उसके बाद जो है वो पैरियों से नीचे उतरती चली गई। नीचे जब उतरती चली गई तो अंदर जो है वहाँ पर जो है उसको हम गवी बोलते हैं, यानी कि वो अंदर सुरंग होती है, बहुत अंदर जाना पड़ता है उस सुरंग में। वहाँ पर जो है बहुत सारी मज़ारें हैं वली अल्लाहों की, वो देखने के लिए वो अंदर जब आई तो थोड़े वक्त के लिए वो घबरा गई थी, क्योंकि वो जमीन के अंदर जाना है और वहां पर पानी टपकता है, ये भी देखकर घबरा गई। वो फौरन बोली देवराज रस जी को बुलाओ। वो और देवराज रस जी अंदर गए, बड़ी भक्ति के साथ जो है वहां पर जो है वो दरगाहों को, उनको जो मज़ारों को देखा, पूछा क्या है, कैसा है, कब से है ये, जो पूरी हिस्ट्री उन लोगों के वहाँ के जो वो वहाँ पे मुसावर कहते हैं हम लोग, वो बता रहे थे उनको। तो बड़ी भक्ति के साथ जो है उन्होंने है ना, उनको उस वक्त जो है 5 रुपये 25 पैसे जो है इन्होंने वहाँ पर नियाज बन के जो है उनको बोला था अपनी जबान से, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए करके वहाँ के मुसावर को बोल के हाथ जोड़ के वहाँ से वो बाहर आए। ये इतना उनका ये था। तकरीबन हम लोग 2 घंटे उनके साथ वहीं पर बिताए और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो ये देख के इतनी खुश हो गई, उतनी खुश हो गई। वो बोल रही थी देवराज साहब को एक 10-15 मिनट के हम यहाँ पर रुक कर बैठ कर जाएंगे करके। उस वक्त जो है फौरन होटल, वहाँ पे एक होटल था, वहाँ से कुर्सियों का इंतजाम करके वहीं पे एक मैदान में इनको बिठा के फिर चाय वाय पिलाए, लेकिन वो चाय उस वक्त नहीं पी। हाथ में उनके वो सिंगदाना, कच्चे सिंगदाने वो बहुत खाती थी। जब भी यहाँ ईबी में रुकती तो उनको जो है सिंगदानों का ये इंतजाम करते थे उस वक्त के लीडर, इतना सब इनका है। बट बहुत शौक से वो सिंगदाने खाते थे जो कच्चे थे। I sure hope you enjoyed joining me inside the Shri Guru Dattatreya Baba Budan Swami Dargah Peetha. It is so incredibly unique, and I know you agree with me. It's something that has emotions, something that has the faith of millions of people, tradition, and centuries of history tied to it. If there has to be a resolution going forward, if there indeed needs to be one, may it be peaceful and acceptable to all. And as you saw, as you joined me in there, Hindus and Muslims continue to worship together at this very unique hill shrine. With Shivamurti here in Karnataka, Shiv Aroor for India Today. You can't possibly say Chikmagalur of Karnataka without thinking of its biggest product, and that of course is coffee. I'm standing here in one of the large plantation estates for coffee here in Chikmagalur, Karnataka, to tell you a story about something that has become a part of everyone's life. In the last few years, not just in the south, but to all parts of the country, Indian coffee has become a really big thing. The north has seen coffee consumption
grow by leaps and bounds in the last few years and last couple of decades, in fact. And that's why it's important to tell the story of Indian coffee. And what better place to start from than here in Chikmagalur, considered by many to be India's coffee capital. Ms. Lekha Chandrasekhar has been very kind to join me today to tell this story, because she's a woman behind one of the most prominent coffee estates here in Chikmagalur. She's standing, as you can see, very proudly among her babies, all of these coffee plants that are stretched across over 100 acres, Arabica and other kinds of coffee that she grows here. Ms. Lekha, thank you very much for your time. I'm very proud to say that. It's grown, the coffee is grown by a woman, and I'm very, very proud of it. Yeah. It's incredible, ma'am, because you've been managing it alone, single-handedly, Yes. with your amazing staff Yes, for yes. so many years. Tell Yes. us a little bit about that. That's what from last 24 years I've been managing the estate, and my staff is very, very cooperative, and even the workers, and they give, no problem anywhere, What kind of coffee do you grow here? What are we looking at here? This is Arabica coffee. I think this one particular variety is called Obata. Okay. This is from Colombia, actually, I had a few seeds from Colombia, then my friend had given me that. Okay. And then I made my nursery from that, and I started growing. So this is These what are- becomes the coffee beans coffee finally? beans like Okay. this. First it becomes the blossom, and then like this, and then like that. So there are some bigger ones here as well. Yes, these are all just see. before the rain. Before the rain, so it had blossomed. So little greenish, So those bigger final beans. wonderful brown coffee beans that one Right. sees in shops. And Yes, stuff. in November. This is how it starts its life. Yes, but all this will fall down because it would have Yeah. become ripened before the season starts. Yes. I'd like to talk a little bit, as we walk around this beautiful estate, and it's a little surreal, I have to admit, ma'am, to be surrounded by coffee plants, because I'm guessing a large percentage of coffee lovers never get to come to a coffee estate to see where it actually all happens. Yeah, so here on India Today, we're very happy to be able to tell this origin story as far as coffee is concerned. Where does Indian coffee stand, Lekha ma'am? In the kind of global sweepstakes, how is Indian coffee regarded? Now it's becoming more popular because of we maintain a lot of quality. Yes. Also So- more eco-friendly, I hear. Eco-friendly. Yeah. It's grown under shade trees, and then sun-dried. Very natural it is, Yeah, actually. So they like it that way, and some of the planters have become, they are very conscious of all these things, and Yeah. they grow only natural coffee. So if Indian coffee is, if I could call it green, more earth friendly, Yes. that matters, doesn't it, in this day and age, to customers especially? Yes. If given the choice between coffee from some other countries, perhaps, then Indian coffee has an advantage as far as being earth friendly is concerned. Exactly. So which are the countries that India competes with, ma'am? We in the top 5, you say that we are number 4 or 5. Yeah. Who are the top guys? Top guys, I told you, Brazil, Yeah. Colombia, Vietnam, Indonesia. Right. Kenya also grow a lot of coffee. So competition with all the countries, we have Yeah. to come up if you have to come up, you know. Yeah. It's a free market, but coffee awareness is also becoming a very big thing. Very big. People- Now in India it has started, The coffee awareness has, because of many coffee cafes Yes. all over India, Yeah. the coffee is becoming more and more popular. Yeah. And it's no longer just a cup of coffee. People are demanding a certain kind. Yes. I would like an Arabica. Okay. I would like a medium roast. Yes, yes. People are using language like that. So there's awareness also now. Yes, definitely. And all the planters have become very, they want to give best quality coffee. Yeah. So they maintain quality a lot, One hears
Lekha ma'am, that weather has also been one concern for coffee growers like yourself. Explain that to us. Why has it become such a big concern? Because we depend on the rains for our estates. You know, the monsoon is very important. Last year we had a very long monsoon. Lot of estates had problem with water, you know, water logging and all that. So it's weather is very important role for plays a very important role, you know. And for our blossom we need rains. You know, at the end of March we need this blossom showers. Yes. Then the blossoms, and after that, you know, to get the fruit, I mean the berry set, we need rains like this. Right. So where their coffee comes from is as important as the quality of the coffee itself. So here's to Indian coffee, here's to Chikmagalur, and thank you very much, Lekha ma'am, for telling us. For coming and Thank you. This beautiful story that nobody is ever going to forget. India is now the third largest market as far as domestic seed demand is concerned, but we're the 18th largest when it comes to international seed demand. How soon do you see that change? A lot of Indians still using routes in the Middle East and elsewhere as they travel abroad. How soon do you see India becoming an international player in the aviation? So we're the third largest market domestically. We're the seventh largest market internationally at 60 million. You combine the two, domestic and international, we're today the fourth largest market. By next year, we will beat the United Kingdom and become the third largest market across the world. We've already gone ahead of the UK in terms of our economic growth numbers. The fact is that we were the 11th largest economy in 2013-14. We're today the fifth largest economy. We put the UK behind us. Those people that had a dream of ruling our country, today we're ahead of them economically, and we've got a diaspora who's actually today the Prime Minister of the UK. And that talks to our potential in terms of us as a people across the world. We are going to become the third largest economy by 2030, breasting Japan and Germany. And a similar growth rate you're going to see in the area of civil aviation. Ponniyin Selvan Part 1 ended on a cliffhanger, charting Arulmozhivarman's journey to become the Chola Empire's greatest ruler. However, there's one more angle the fans are keenly hoping for: the extension of relationship between Chyan Vikram's character Aditya Karikalan and Nandini, essayed by Aishwarya Rai Bachchan. The childhood sweethearts who shared mutual feelings of love and admiration turns bitter after an unfortunate event leading to a premature end to a love story which was meant to be forever. And Aishwarya is keen on taking revenge. However, looks like fans aren't over their romantic scenes yet. Interestingly, the makers shared this melody which showcases the heartbreak and pain of separation, featuring Aishwarya Rai Bachchan and Vikram. The
cinemaker. It's the big summer battle in the Deccan. And the best view is always from the ground. Elections here mostly fought on the metrics of caste. Who better than a seasoned political reporter to catch the mood of the state? Ready with her election dispatch. Coming soon, only on India Today. Shiv says, Namaskara, thanks for staying with my non-stop ground coverage from this beautiful pole-bound state. We're coming to you live from Chikmagaluru, the coffee capital of the country. Well, while I'm here, remember, there's a lot happening in the rest of this pole-bound state. Let me quickly take you through the top developments in Karnataka at this time. BJP Chief JP Nadda has launched the Karnataka Poll Manifesto today in Bengaluru. The BJP has made 16 big promises, which includes implementation of Uniform Civil Code and NRC and free ration and milk to the poor. The Congress has slammed the BJP, saying 90% of its election promises were never fulfilled. Union Home Minister Amit Shah held a massive roadshow in Tumakuru district today. Amit Shah defended the BJP government's decision to scrap 4% quota for Muslims, saying that the party never believed in religion-based reservation. Calling the Muslim reservation unconstitutional, Shah repeated that the Congress would reverse the decision if it came to power. Meanwhile, Siddaramaiah has slammed the BJP manifesto, calling it bogus. Siddaramaiah pointed out that only 55 out of 165 promises made by the BJP in 2018 were implemented, whereas the Congress implemented almost all. Calls this the difference between the Congress and the BJP. And of course, Gali politics continues in Karnataka. After poisonous snake and nalayak jibes, Congress leader Rahul Gandhi has hit out at Prime Minister Modi in Tumakuru rally today, alleging the Prime Minister is only bothered about himself and doesn't speak of what he's done. And as we first reported, the Congress has launched a Cry PM campaign after Pay CM. This is against the BJP after Priyanka Gandhi lashed out at Modi for what she says was crying in front of the people. She even suggested the Prime Minister learn from her brother, who claims is ready to take a bullet for the sake of the country. Well, after his father used the poisonous snake metaphor to describe the Prime Minister, Congress President Mallikarjun Kharge's MLA son Priyank Kharge has taken the same route of targeting the Prime Minister directly and called him Nalayak. That translates into useless. What's the context? What's this report? मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है. Gali politics has taken center stage in poll-bound Karnataka. After Prime Minister Modi questioned Congress over hurling the poisonous snake abuse on him, the Gandhi family hit back. कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ कर्नाटकಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो. देखिए, इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं उससे ध्यान मत भटकाइए. मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, लूटा गया है जनता को, यही मुद्दे हैं. अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं
जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। Congress mocked Modi for crying over abuses and released Cry PM posters. Congress MLA Priyank Kharge meanwhile took another personal jibe at PM Modi, calling him a nalaik beta, a worthless son. Days after his father Kharge called Modi a poisonous snake. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? हाँ ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. The BJP hit back at the Gandhi family. जो एक देश का प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं ना, इससे कांग्रेस कर्नाटक में सफाई हो जाएगा। जो गांधी फैमिली है, जो सोनिया गांधी फैमिली है, वो नालायक फैमिली है, देश के लिए वो खतरा है। कांग्रेस पार्टी का सभी नेता, सोनिया गांधी से लेके अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी प्रियंका खड़गे तक, जब उनका पिताजी है इसे गंदी भाषा का, अनाप शनाप भाषा का प्रयोग कर सकते तो बेटा भी ऐसे करते। इट शोज द कल्चर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। Modi has earlier listed 91 times the Congress abused him and said it will inspire him to work even harder. मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। Will Gali politics impact Karnataka polls? With Nagarjun Dwarkanath in Bengaluru, Bureau Report, India Today. And it's also Manifesto Day in Karnataka with only 9 days to go for polling. The Congress's manifesto comes out tomorrow, but today it was the BJP's turn, the ruling party, to publish its Praja Dhwani. Many promises, lots of rice being promised, and of course free Nandini milk also being pledged to the poor. Take a look at this full comprehensive report on what the BJP has promised voters this time. It's the battle for freebies in Karnataka. The BJP on Monday released its election manifesto, Praja Dhwani, listing 16 big promises. The ruling party has pledged 5 kilograms of rice and millet every month to households below poverty line or BPL. BPL families will get half a litre Nandini milk every day. They will also be entitled to 3 free cooking gas cylinders every year. The BJP has promised to distribute 10 lakh housing sites for the homeless and 5 lakh rupees in assistance. But, for example, half liter of milk, it is the part of the nutritious food to be given on Poshan Abhiyan. Earlier in government of Karnataka, we were giving them eggs. So is it a freebie? So giving nutritious food to the poor people, I don't think it's a freebie. It is a necessity. Freebies are when you say कि हम सबको बिजली मुफ्त कर देंगे, पानी का कुछ देना ही मत. When I talk about that the BPL will get 5 kg of rice and 5 kg of wheat, this is empowerment, because
first of all, he or she needs it. Number two, we are empowering them. The BJP has also promised implementation of Uniform Civil Code and introduction of a National Register of Citizens if it is voted back to power. यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वो आपको लगता है पूरा हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड उसके बाद जो है अब यहाँ अन्य प्रदेशों में जहाँ सरकारें बन रही हैं वहाँ इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप रिकमेंडेशन करें? नहीं, वो तो अभी हम कमेटी रचाएंगे और कहाँ ईच स्टेट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना वो देखेंगे. The principal opposition party, the Congress, will launch its manifesto on Tuesday, but it has already announced a series of freebies if voted to power. The Congress is calling its list a guarantee card. It includes 2,000 rupees per month for every housewife, 200 units free electricity for every household, 10 kilo rice every month for people below poverty line, 3,000 rupees a month for 2 years for unemployed graduates, 1,500 rupees a month for 2 years for unemployed diploma holders. We have given strength to every common man. If they do, they are saints. If we do, they look at it and declare it. I think BJP in its manifesto and its promise in its administration has completely failed. Prime Minister Narendra Modi had recently warned against what he called Revdi politics. देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है. मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं. Incidentally, both BJP and Congress are banking on freebies and reservation to win elections in Karnataka. BJP has announced its Karnataka state election manifesto and has announced uniform civil code and 3 gas cylinders per BPL family as well as half a litre of Nandini milk. The Congress is questioning, is this not rave deep culture, and are asking them questions, why give gas cylinders if you don't agree there is price rise? While the BJP hits back at Congress saying this is not freebie culture but the culture of empowerment. Nagarjun Dwarkanath for India Today. And the BJP, of course, is already under attack for many of the promises it's made in its manifesto. I want to go straight across to Bengaluru now, where India Today's Anaga Keshav is tracking BJP National President JP Nadda's roadshow in the state capital. Anaga, big day for the BJP. Their Praja Dhwani has just been published. JP Nadda out on the road campaigning today. What's the latest? They're trying to defend all the promises they've made. You know, that's right, Shiv. The BJP today released its mega manifesto. And, you know, while all these days the BJP has been criticizing the Congress for releasing a slew of freebies, now the BJP has come out releasing 3 free cylinders on 3 most important festivals in Karnataka. And apart from that, half-litre Nandini milk will also be given to all the BPL households, including 5 kg rice and 5 kg millets. And to this, the Congress has now come out attacking the BJP, saying when we did that, you said we were doing freebie politics. Now what are you doing? Now BJP has also hit back, saying that what we are doing is out of necessity, it is out of sheer need, and this is not out of appeasement. This is how the BJP has started defending itself. But you know where, Shiv? We are standing right now in the exact location where JP Nadda's roadshow is supposed to happen, but it is pouring outside, so it remains to be watched what the next course of action is supposed to be. All the Karyakartas and workers who had gathered here for JP Nadda's roadshow have now come indoors. So it just remains to be seen when the roadshow is going to happen. It was supposed to begin now, but then it started raining. But it remains to be seen what the next course of action for the BJP will be with regards to JP Nadda's roadshow. Right. And remember, the Congress's manifesto comes out tomorrow. Today is the BJP's turn to get the attacks from the Congress. Tomorrow, the Congress's manifesto will be out and it will be the BJP's turn to return fire. Well, here's
India Today's Himanshu Mishra catching up with JP Nadda just before this roadshow began. Take a look at this exclusive chat. नड्डा जी, आज आपने मैनिफेस्टो रिलीज किया भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। कर्नाटक के अंदर पिछले 3 दशकों के अंदर ऐसा रहा है कि ज्यादातर किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। वो घड़ी के पेंडुलम की तरह हमेशा नतीजे आते हैं, एक बार आपके फेवर में आते हैं तो दूसरी बार कांग्रेस में, और तीसरी बार जेडीएस या तो आपके साथ मिलकर सरकार चलाती है या फिर कांग्रेस के साथ। इस बार किस तरीके से देखते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है, और मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। किसी को विश्वास, कभी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई है तो मोदी जी के नेतृत्व में, और जब वहां योगी जी मुख्यमंत्री रहे। उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हमारी दोबारा सरकार आई है। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आए, मणिपुर में हम दूसरी बार सरकार में आए, नागालैंड में हम दूसरी बार सरकार में आए। ये नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ कर्नाटक में भी लंबे समय बाद, क्योंकि चुनाव जब हो रहे हैं तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन चुनाव से पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों याद आ जाती है नड्डा जी? उत्तराखंड के चुनाव थे, उससे पहले आपको याद आई। गुजरात के चुनाव थे, उससे पहले आपको याद आई। कर्नाटक के चुनाव घोषित हो गए, अब आप कह रहे हैं कि कमेटी बनाएंगे, नतीजे आएंगे तो हम कमेटी बना देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप लगातार राज्यों में जहां चुनाव होते हैं वहीं इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो हिमांशु जी, याद आई ऐसा नहीं है। जब करना होता है तब हम कहते हैं, उससे पहले बार को कहने का कोई अर्थ नहीं होता। अब हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाने के समय हमारा ये एजेंडा है, और ये हमारा ही नहीं है, ये संविधान के निर्माताओं का कहना था कि सभ्य समाज के लिए और सबको साथ लेकर के चलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को जहां जहां हमारी सरकारें आएंगी वहां हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और उसकी माइन्यूट डिटेल्स को वर्कआउट करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे। ये कोई झुंझुना तो है नहीं, इसमें सारी चीजों की डिटेल्स को वर्कआउट करना पड़ेगा। समाज में समरसता पैदा होते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, इसकी आवश्यकता होगी। अगर इन डिटेल्स को वर्कआउट करना है तो हाई पावर्ड कमेटी बैठेगी, और इसको स्टेट आगे लागू करेगा, क्योंकि हम सक्षम होंगे, इसलिए हम इसको मैनिफेस्टो में कह रहे हैं। सर, एक सवाल ये है, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन था उसको आपने खत्म कर दिया, 4%, अब वो वोका लिगा और लिंगायत को दे रहे हैं। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। अब आप कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक था, तो इसको किस तरीके से लागू करेंगे? ऐसा है ना, सबसे पहली बात तो समझिए कि संविधान के निर्माताओं ने किस इंटेंशन को लेकर के रिलीजियस रिजर्वेशन को ऑब्जेक्ट किया था। आप संविधान समिति के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को पढ़िए, अंबेडकर के विचार को पढ़िए। बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रिंसिपली उन्होंने कहा, रिलीजियस रिजर्वेशन इज नॉट टू बी गिवन इन ए सेक्युलर स्टेट। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और स्टे किया है, जजमेंट नहीं दिया है, तो स्टे तो होता ही है। अब इलेक्शन है तो उन्होंने कहा कि भाई रुक जाओ, उसके बाद जरा हम इस पर फैसला करेंगे। ये कोर्ट का अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार, हम तो संविधान के लेटर और स्पिरिट को पढ़ करके बोल रहे हैं ना। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। आज उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए और ज्यादा निचले शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वो निकम्मे। हिमांशु जी, सबसे पहली बात यह कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से नीचे तक मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है, और इनका स्तर बहुत ही नीचा हो गया है। इनके आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, और खुद सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके के शब्द का उपयोग किया है, राहुल गांधी ने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, तो उनके नेता जो उनके टॉप नेता बोलेंगे उसी के अनुयायी होंगे। और ये इनके मन का विष है, ये इनके मन में बौखलाहट जो आती है, क्योंकि मोदी जी की शख्सियत के सामने ये सब छोटे पड़ रहे हैं, और इसलिए यह अब बौखलाहट में और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। यह निंदनीय है, और साथ ही साथ यह इस तरह की भाषा भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, और भारत की जनता हमेशा इसको मुंहतोड़ जवाब देती है। सवाल ये है कि कई नेता आपके, चाहे वो जगदीश शेट्टर हो, सऊदी हो जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत से नेता छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी यहाँ पर जीत रही है, तो जीतने वाली पार्टी के नेता छोड़कर क्यों चले जा रहे हैं?
ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी और विचार को लेकर के आगे बढ़ती है। जिसके व्यक्तिगत स्वार्थ में विचार आड़े आ जाए वो रास्ता छोड़ देता है, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे छोड़ने वाले अनेकों लोग हमारी यात्रा में मिले हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि ऐसे सारे लोगों की लिस्ट बना करके मुझे दिखा दीजिए, आज ये है कहां? विचारों के साथ चलने वाले लोगों से बिछड़ करके बिछड़ ही जाते हैं। Well, I'm saying namaskara and thank you very much for watching. Signing off from Chikmagalur, my next stop, and I'll be seeing you tomorrow on the show at 5 p.m. from Srirangapatnam, the land of Tipu Sultan. The news continues here on India Today. Up next, the Kerala story, the controversial film in Kerala that's making all the news. Akshita gets into that big story with a national exclusive. That's at 6 p.m. Tell me, when exactly you joined ISIS? Weather forecast now. Delhi, maximum 25 and minimum 20 degrees. Mumbai, maximum 31 and minimum 27 degrees. Kolkata, maximum 35 and minimum 22 degrees. Bangalore, maximum 29 and minimum 22 degrees. Chennai, maximum 32 and minimum 25 degrees. Hyderabad, maximum 30 and minimum 21 degrees. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. कितना बड़ा फैक्टर? देखिए, हर चुनाव में उनकी लोकप्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है। अब हमें नहीं बतला सकते कितना बड़ा फैक्टर, कितने परसेंट है, कितने परसेंट लोकल लोग होते हैं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी लोकप्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ऐसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी तुलना एक विषैले सर्प से कर देते हैं, तो इससे आपको लगता है लोगों के मन में क्या असर होगा? मुझे लगता है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसे ये लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण इनको पीड़ा है। उसके कारण जैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सदमे में आ गई हो। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके अंदर वह शक्ति दे ताकि लोकप्रियता जी, मोदी जी की लोकप्रियता के कारण जो उनको सदमा पहुंचा है, जो पीड़ा हुई है, उसको वो सहन कर सके। पर क्या ऐसे आरोपों के जवाब में सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी विष कन्या कहना सही होता है? देखिए, मैं ब्लू स्टार फास्ट कूलिंग एसी A very good evening. You're watching 6 p.m. Prime here on India Today. I'm Akshita Nandagopal, and our focus this evening is on the controversy that's snowballing over the film The Kerala Story. Where did the figure of 32,000 women being radicalized, being converted and sent to Syria, Afghanistan come from? Why is the name of the film The Kerala Story? Is there an intention to malign the name and the image of the state? We'll be joined by the team of The Kerala Story. I'll be getting you an exclusive conversation